हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ डेंगू के बारे में। उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडेस मॉस्किटो, प्रेजेंट कंडीशन, ग्लोबल एंड इंडियन, हाई रिस्क पेशेंट्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिसर्च डाटा, बेनिफिट्स एंड रेफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. Dengue fever, commonly known as breakbone fever, is a flu-like illness caused by the dengue virus. Dengue viruses are arboviruses capable of infecting humans and causing disease. These infections may be asymptomatic or may lead to classical dengue fever or dengue hemorrhagic fever without shock or dengue hemorrhagic fever with shock. Now the agent Flavivirus genus has 4 serotypes, DEN 1, DEN 2, DEN 3 and DEN 4. Recovery from infection is believed to provide lifelong immunity against that serotype. However, cross immunity to the other serotypes after recovery is only partial and temporary. Secondary infection by other serotypes increase the risk of developing severe dengue. मतलब कि अगर किसी को एक बार डेंगू हो गया है तो फिर ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा से डेंगू नहीं होगा। एक बार डेंगू होने से उसकी इम्यूनिटी उस सीरोटाइप के अगेंस्ट ही डेवलप होती है, दूसरे सीरोटाइप से उसे दोबारा से डेंगू हो सकता है। होस्ट है ऑल ह्यूमन एजिस, वेक्टर है एडिस एगियापैथी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। द एडिस एगियापैथी मॉस्किटो इज कंसिडर्ड द प्राइमरी वेक्टर ऑफ डेन. It lives in urban habitats and breeds mostly in man-made containers. Aedes aegypti is a daytime feeder. Its peak biting periods are early in the morning and in the evening before sunset. Aedes albopictus, a secondary dengue vector in Asia, has spread to more than 32 states in the USA and more than 25 countries in the European region. Aedes albopictus is highly adaptive. Its geographical spread is largely due to its tolerance of colder conditions as an egg and adult. Now the transmission. Dengue viruses are transmitted to humans through the bites of infected female Aedes mosquitoes. After an extinct incubation period of 8 to 10 days, the mosquitoes become effective and can transmit the infection. Now, characteristics of the Aedes mosquito. One distinct physical feature, that is black and white streaks on its body and legs, hence also called the tiger mosquito. Bites during day, lays its eggs in clean and stagnant water. The average lifespan of Aedes mosquito is 2 weeks. The mosquitoes can lay eggs about 3 times in its lifetime and about 100 eggs are produced each time. So, human develops disease after 5 to 6 days of being bitten by infective mosquito. Now, the present condition, उसमें हम पहले देखेंगे global. Dengue fever and its severe forms, dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome, have become major international public health concerns. Over the past 3 decades, there has been dramatic global increase in the frequency of dengue fever, dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome and their epidemics. It is found in tropical and subtropical regions around the world, predominantly in the urban and semi-urban areas, and are now spreading to rural areas. About 3.9 billion people in 128 countries are at the risk of infection with dengue viruses. A recent estimate indicates 390 million dengue infections per year, of which 96 manifest clinically with any severity of disease. The number of reported cases have increased from 2.2 million in 2010 to 3.2 million in 2015. Not only the number of cases are increasing as disease is spreading to new areas, but explosive outbreaks are occurring. Worldwide, annually about 5 lakh people with dengue hemorrhagic fever require hospitalization. Approximately 90% of them are children aged less than 5 years, and about 2.5% of those affected died. Dengue and dengue hemorrhagic fever is endemic in more than 100 countries in the WHO regions of Africa and the Americas, Eastern Mediterranean, Southeast Asia and Western Pacific.
The Southeast Asia and Western Pacific regions are most seriously affected. Detection of all four serotypes has now rendered the countries hyperendemic. The countries of Southeast Asia region are divided into three categories. India is included in category A. उसमें है मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, लीडिंग कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ अमंग चिल्ड्रन, hyperendemicity with all four serotypes circulating in urban areas, spreading to rural areas. अब हम देखेंगे इंडियन कंडीशन. In India, the risk of dengue has shown an increase in recent years due to rapid urbanization, lifestyle changes, and deficient water management, including improper water storage practice in urban, peri-urban, and rural areas, leading to proliferation of mosquito breeding sites. The disease has a seasonal pattern. The case peak after monsoon and it is not uniformly distributed throughout the year. लेकिन साउथ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात में उसका ट्रांसमिशन पेरिनियल है. Dengue is endemic in 35 states. During 2017, about 1,57,000 cases were reported with 253 deaths. The case fatality rate was 0.16%. As seen, the highest number of cases were reported from Tamil Nadu, followed by Kerala, Karnataka, Punjab and West Bengal. Now the high risk patient कि जिसको मोर सीवियर डेंगू होने के चांसेस है वो हम देख सकते हैं ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, पेप्टिक अल्सर डिसीज, वुमन हु आर इन मेंस्ट्रुएशन और हैव एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कंजेनिटल हार्ट डिसीज एक्सेट्रा. Now the clinical manifestation. Dengue fever is characterized by the iceberg or pyramid phenomenon. At the base of the pyramid, most of the cases are symptomless, followed by the dengue fever, dengue hemorrhagic fever, and dengue shock syndrome. We can see in table dengue virus infection asymptomatic or symptomatic, or symptomatic may be undifferentiated fever जिसको वायरल सिंड्रोम कहते हैं, और डेंगू फीवर विथआउट हेमोरेज और विथ हेमोरेज, और डेंगू हेमोरेजिक फीवर विथआउट शॉक और विथ शॉक. सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल डेंगू फीवर. All ages and both sexes are susceptible to dengue fever. The illness is characterized by an incubation period of 3 to 10 days. The onset is sudden with chills and high fever, intense headache, muscle and joint pain which prevent all movement. Within 24 hours, retroorbital pain, particularly on eye movements or eye pressure and photophobia develops. Other common symptoms include extreme weakness, anorexia, constipation, altered taste sensation, colicky pain, etc. Fever is usually between 39 to 40 Celsius. The skin eruptions appear in 80% of cases during the remission. Fever lasts for about 5 days, rarely more than 7 days, after which recovery is usually complete. Now the dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever is a severe form of dengue fever जो 3 फेज में डिवाइड है, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज एंड रिकवरी फेज. सबसे पहले हम देखेंगे फेब्राइल फेज. Following an incubation period of 4 to 6 days, the illness commonly begins with high fever accompanied by facial flushing and headache. Anorexia, vomiting, epigastric discomfort, tenderness at the right costal margin and generalized abdominal pain are common. अब फर्स्ट फ्यू डेज़ में तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी डेंगू फीवर जैसा ही लगेगा, लेकिन मैक्यूलोपॉपुलर रेस रूबेलिफॉर्म टाइप की वो इसको अलग करता है. The temperature may be 40 to 41 Celsius. Then dengue fever and dengue hemorrhagic fever को differentiate करता है वो है plasma leakage and abnormal hemostasis manifested by a rising hematocrit value and moderate to marked thrombocytopenia. hematocrit value है हमारे ब्लड में आरबीसी के परसेंटेज है वो बढ़ जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं. नाउ द क्रिटिकल फेज. When the temperature drops to 37.5 to 38 Celsius or less and remains below this level, usually on
day 3 to 7 of illness and increase in capillary permeability in parallel with increasing hematocrit levels may occur. These mark the beginning of the critical phase. The period of clinically significant plasma leakage usually lasts 24 to 48 hours. Progressive leukopenia followed by a rapid decrease in platelet count usually precedes plasma leakage. ल्यूकोपेनिया मतलब कि WBC काउंट डिक्रीज हो जाते हैं. Shock occurs when a critical volume of plasma is lost through the leakage. It is often preceded by a warning signs. That is very important: abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleeding, lethargy, restlessness, liver enlargement more than 2 cm, and oliguria. Now the recovery phase. If the patient survives the 24 to 48 hours of critical phase, a gradual reabsorption of extravascular compartment fluid takes place in the following 48 to 72 hours. उसमें जनरल वेलबींग इम्प्रूव्स, एपेटाइट रिटर्न्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स कम होंगे, हेमोडायनेमिक स्टेटस स्टेबिलाइज एंड डायूरेसिस इंड्यूसेस. Severe dengue. Severe dengue is defined by one or more of the following: plasma leakage, they may lead to shock, then severe bleeding, severe organ impairment. अब हम देखेंगे डायग्नोसिस. सो क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, उसमें सबसे पहले डेंगू फीवर में क्लिनिकल क्राइटेरिया: फीवर विथ 2 or more of the following: हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया यानी कि मसल पेन, आर्थल्जिया यानी कि जॉइंट पेन, रैश, हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में ल्यूकोपेनिया यानी कि रिडक्शन ऑफ WBC लेस देन और इक्वल टू 5000, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट लेस देन 1,50,000, राइजिंग हेमेटोक्रिट 5 to 10%. देन डेंगू हेमोरेजिक फीवर, उसमें क्लिनिकल क्राइटेरिया है अबव क्राइटेरिया फॉर डेंगू फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन. पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट. अब ये पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट क्या है, उसको हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं. वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. उसमें ब्लड प्रेशर कफ अप्लाई करते हैं और उसको इन्फ्लेट करते हैं बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में फॉर 5 मिनट्स के लिए. इफ़ देर आर मोर देन 10 पिटेकी पर स्क्वायर इज फाउंड तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं. देन एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज. सम एविडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इन स्किन और अदर ऑर्गन्स लाइक ब्लैक टेरिस्टूल्स, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड एब्डोमिनल पेन. देन लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाना लेस देन 1 लाख, हेमेटोक्रिट राइज 20% और मोर. देन डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें क्लिनिकल है अबोव साइन एंड सिम्टम्स प्लस सर्कुलेटिंग फेलर, टेकिकार्डिया, कूल एक्सट्रीमिटीज, वीक पल्स, पल्स प्रेशर लेस देन और इक्वल टू 20 mmHg with high diastolic pressure. Hypotension by age defined as systolic pressure less than 80 mmHg for those aged less than 5 years or 80 to 90 mmHg for older children and adults. Laboratory finding thrombocytopenia and hematocrit rise more than 20%. Then diagnostics. कई मेथड्स यूज़ होती है डेंगू इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए. उसमें है वीरोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट. वीरोलॉजिकल टेस्ट दैट डायरेक्टली डिटेक्ट एलिमेंट्स ऑफ द वायरस एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट विच डिटेक्ट ह्यूमन डिराइव्ड इम्यून कंपोनेंट्स दैट आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द वायरस. वीरोलॉजिकल मेथड्स में है RT-PCR दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सीरोलॉजिकल मेथड्स में है ELISA एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. देन ट्रीटमेंट. सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ इलनेस इज मोस्ट एसेंशियल. बेड रेस्ट एंड एंटीपायरेटिक्स ड्यूरिंग द फेब्राइल पीरियड आर यूज्ड. पैरासीटामोल इज प्रिफरेबल फॉर फीवर मैनेजमेंट. Cold sponging for reducing fever.
Avoid aspirin, brufen, etc. Those can cause gastritis, vomiting, platelet dysfunction. Adequate fluid intake must be ensured. Close monitoring is required for further progression into dengue hemorrhagic fever, dengue stroke syndrome. For patients with significant bleeding manifestations and thrombocytopenia, platelet transfusion as well as blood transfusion are required. For patient in shock, rapid intravenous fluid normal saline bolus is given. If there is persistent shock or hemoconcentration, colloids in the form of plasma are indicated. और अगर पेशेंट ओरली लिक्विड नहीं ले पा रहा है और एसिडिटी स्टेबल नहीं है तो उसको आईवी फ्लूइड्स देना है. नाउ प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. Dehydration can occur when a person loses too much fluid from high fever, vomiting or poor oral intake. Fluid to be taken by patient at home. हम टेबल में देख सकते हैं कोकोनट वाटर, ORS, बटर मिल्क, बैली वाटर, फ्रूट जूस और कॉमर्शियल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. नाउ द मैनेजमेंट. एबल टू टेक लिक्विड्स, नो वार्निंग साइंस, वाइटल स्टेबल एंड एससीटी यानी कि हिमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम इज स्टेबल. If yes, then OPD based care, and if no, then admit and IPD care. Now in IPD care, goal is optimal hydration with stable HCT. Do CBC twice a day during critical phase, which will guide you IV fluid therapy. Assesses for mucocutaneous bleed. Two most important things in the monitoring is vitals and HCT. What is new in management? पहले है विटामिन डी. हाई डोज विटामिन डी हैज़ एंटीवायरल प्रॉपर्टी. Oral vitamin D3 reduces the severity and length of dengue fever. Then vitamin C, it acts as an antioxidant, strengthen capillaries, stimulate the immune system. Then papaya leaf. The extracts are likely to possess membrane stabilizing properties and protect blood cells against stress-induced destruction. This property may be useful in patients with dengue infection where the leaf extracts could possibly prevent platelet lysis. इसलिए डेंगू में प्लेटलेट लाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए पपाया एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है. स्टीरॉइड्स, डॉक्सीसाइक्लिन फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़. Now the research data. Vaccination against dengue. The first dengue vaccine, Dengvaxia, developed by Sanofi Pasteur, was licensed in December 2015 and has now been approved by regulatory authorities in 20 countries. In November 2017, the results of an additional analysis to retrospectively determine serostats at the time of vaccination were released. The analysis showed that the subset of trial participants who were inferred to be seronegative at the time of first vaccination had a higher risk of more severe dengue and hospitalization from dengue compared to unvaccinated participants. As such, use of vaccine is targeted for persons living in endemic areas ranging from 9 to 45 years of age who have had at least one documented dengue virus infection previously. Now, the World Health Organization, in partnership with Ministry of Health research centers and laboratories around the world, has developed a dengue surveillance system called DengueNet, a database that can be continuously updated to share current and historical data on dengue cases. The goals of DengueNet are to standardize reporting of dengue cases and to improve the preparedness of public health officials by providing early warnings prior to epidemics, which can help reduce fatality rates. Now, the benefits. The advantage of examining this compilation is that layman can get a legitimate comprehension of the illness of dengue. One can get knowledge about transmission and clinical manifestation of dengue.